आपसे कहा, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अनिल मेहता. ही इज द फाउंडर ऑफ प्रकाशदीप इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एंड ही इज ऑल्सो द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च फॉर आयुर्वेदा. उन्होंने काफी सारे किताबें लिखी हैं, उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं एंड ही इज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड. तो अगर आपको उनसे बातें करनी है तो अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए. So, Dr. Mehta, welcome to Zee Companion. Thank you, thank you. I would start by asking you first, exactly Ayurveda क्या है? You see, Ayurveda can be defined as a complete healing science using the principle, inherent principle of the nature. By saying so, nature, you see, we are part of the nature. Right. Nature is complete in its own. Nature has got a typical rhythm. And we also, being part of the nature, have got the same type of rhythm. Right. So rhythm in the nature, if we follow, if we go with the nature of our own, if we go with that nature, we are healthy people. And if there is no rhythm, if we are not going, if we are going against that rhythm, then we talk about the chaos. Okay. Rhythm से आपको exactly क्या कहना है? What do you mean by rhythm? You see, there is a definite rhythm in the nature. By saying that, I mean to say there is definite pattern in the nature. You see, there is summer. After summer, there is winter. Right. After winter, there is spring. And so every year, hardly matter whatsoever happens, you face this type of changes automatically. Right. So grass grows in the field. Rabbits eat that grass. And fox eat that rabbit, and at the end that fox is eaten by the lion, and lion dies, and that is also food for the grass to grow again. There is a rhythm. Right. Child takes birth, he grows young, old, he dies. Again there is birth. There is definite rhythm in this. Right. So in our body also, there are changes with the time. And so we have to follow that. We have to eat according to our age. We have to eat according to the season. We have to know about that. We have to get awareness about that. You see, in winter you have got totally different type of taste development. You can eat heavy stuff, but in summer you can't do that. Okay. In summer you feel like eating very light things. Right. So, but what we are doing, we are eating dogmatically same stuff in the winter, in the summer, in the spring. We don't take care of that. Right. So with seasons you have to. Yes, Doctor, I'm going to have to pause you for a minute. We have a caller on the line. Yes. Meena, welcome to Zee Companion. Yes. Hi Meena. Hi. आपको क्या पूछना है डॉक्टर साहब से? Oh, hello, doctor. Namaste. Namaskar, namaskar. I'm Pitta dosha. You are Pitta Hello? dosha. Okay. Yes. And otherwise I'm very healthy. That's good. That's good. But I suffer from knee rheumatism. Rheumatism. Okay. Yes. You see, Pitta. What would you suggest? I will tell you. Herbal treatment. Yeah. Meena, I'm going to have to ask you to put your TV volume down, please. हमको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे. Okay. Thank you very much. Yes, please. Yeah. You said that you are Pitta. Yes. Okay. Yeah. Okay. I have done that. Okay. Thank you, Meena. Yeah, So, Dr. Sabi. I would explain you very in simple words. If you are Pitta, it means that your enzymes and hormones should be much more than other people. It should be prominent. And having much more enzymes than other family members, you should be able to digest each and everything you eat. But fact is, what you have, you can lose that. What you don't have, you can't lose that. So you are having Pitta, then sensitivity to lose that Pitta is too much in your body. It means there are possibility of not having enough enzymes. If enzymes are not enough, then your body won't be able to digest food stuff. The time body won't digest, that will be left behind. Left behind food is going to fissure, how you call that? It's going to ferment. In the stomach in the itself. body, in the body. Okay. And that I don't fermented have that stuff. problem. I'm okay. Yeah. My food is digested. Yeah, that's the reason of rheumatism in Ayurveda. That fermentation comes in our joints, and that's the reason of rheumatism. If you are saying that you are suffering from rheumatism, you are not okay. There is suffering. That is, we have to treat that. So very simple things I can tell you. You must
do few things in your, you must avoid few things in your food. Yogurt you must not take, banana you should not take, you should not take very cold stuff. You have to ignite your fire again. So black pepper is very good for you, and you must take ginger. Dry ginger is better than the fresh one, and don't take cold stuff. Always prefer taking warm stuff. Perfect. Yes. Meena, does that answer your question? And I would just say कि before you make any alterations or any changes in your diet, आप आपके GP से भी एक बार पूछ लीजिए. पर डॉक्टर साहब ने आपको एडवाइस तो दे ही दिया है. I hope आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, मीना. Thank you so much for your call. Okay. So आप ये पित्त दोष के बारे में बात कर रहे थे. तो कौन-कौन से दोष हैं? There are three main doshas, that is Vata, Pitta and Kapha. Vata is movement in our body. Everything whatsoever moves in our body, even thoughts are moving. Now you are sitting here, at the same time you can be at home. So right. movement, that is because of the Vata. Okay. If there is any mismanagement in our movement, by, for example, blood circulation, having thoughts, too much thoughts, or not having thoughts, and these are all because of the Vata. Doctor, I'm going to have to pause you again for a minute. We have another caller online. All right. Hello, Prakash. Welcome to Zee Companion. Hello, good evening. Good evening. You know, I would like to ask to the doctor that I'm getting a lot of night sweat in the middle of the night. Okay. What is your age, please? I'm over 55. You are over 55. You see, like women, they in this age have got menopause. I shouldn't be using that word, but I will say this is also one of same type of problems. This is a hormonal problem, midlife crisis we call that. So this is because of the imbalance of the hormones. So hormones correction is needed. So you should not be taking very warm stuff, and we must give you some tablets of Mukta Pishti. Mukta is made of pearls, what ladies wear as an ornament. So this is very, very cool. It's good for your blood pressure also, and it's going to correct your hormones. I've got hypertension. Yeah, Mukta. You can buy from the market. Yeah. So that, that's going to help you certainly. I know that. All right. Natural product. Second thing, I mean, from where I can get this medicine? Oh, it's available in every shop here by drugstore, things like that. Well, Prakash, I hope that really answers your question, and thank you so much for calling us. Yeah. Doctor, we have another caller online. Yes. We have Raj. Raj? Hello? Hi, Raj. Welcome to Zee Companion. Thank you. How are you doing? I have a question regarding Ayurveda. Yes, please go ahead. Is anxiety curable with Ayurveda medicine? Yes. You see, anxiety, we must first look for the reason behind. The reason behind this anxiety comes not for nothing. It's lifestyle problem actually. You have to maintain your lifestyle according to your nature. So you should go with your nature. So first identify yourself, what type of dosha you are, and then your food stuff should be according to your dosha, and your lifestyle should be rectified accordingly. And that's going to give you good relief in your anxiety. Otherwise, it's a side effect or one of the effect of high blood pressure. So if high blood pressure is there, then people most of the time they feel restlessness and they are having that anxiety, tension type of symptoms. So just go to your GP, get it checked. Your blood pressure, you should get it checked. And if it's blood pressure, then he will be giving you medicines, and automatically this is going to be cured. All right, Raj, does that answer your question? Very nice of you. Thank you very much. My pleasure. All right, thank you so much for your call, Raj. Thank you. Doctor, we have Chandrika on the line waiting to talk to you. Yes, yes. Hello, Chandrika. Hello. Hi, Chandrika. Welcome to Zee Companion. Hello. Ji, namaskar. Very good evening. Can I speak to Dr. Mehta, please? हाँ जी, वो सुन रहे हैं. He's listening. Speaking. Hi, Dr. Mehta. I'd like to find out. I'm over 50 and I suffer a lot with Vayu and peat and all that. And Vayu and what word you used? Can you repeat it? Peat. Heat. Heat. Okay. Yeah, and this question is same like... I suffer a lot with that, especially once a month, like, you know, during a cycle. Yes. But, this is all hormonal disbalance. I take ginger powder and
contour powder, but that helps a lot. But at Now, the you same see, time, I have get understood blisters your in question. my mouth because of that. Yeah, it can be So cured. what would you suggest I take? Yeah, you see, most of the ladies at this age, of this age group, they suffer from this type of disease. This is all because of the hormonal disbalance. So estrogen and progesterone, when they are not in balance and gradually they are reducing, this type of symptom arrives. So what you should do is very natural product we can get from market is Mukta Pishti. I'm going to repeat because same type of question was a gentleman before you, he also called for the same type of disease. And being ladies, for the women, we use Shatavari. Shatavari along with Mukta Pishti is very good remedy of this. You should use a little bit more extra soya products, soya milk, soya beans. So soya has got natural estrogen in this, and that's going to cure this. So have much more soya and these two products what I told you, Shatavari and Mukta Pishti. All right, perfect, Chandrika. Does that answer your question? Yes, sir. So thank you so much for your call. तो आप जो बता रहे थे, women face a lot of problems, hormonal changes जो होते हैं. Yeah, see, in women at the age of 12, there's development, there's increase in the hormone level. Girls are getting into the womanship. Right. They are changing they are becoming women. And at 50, 45 to 50, women, they are losing all that hormones, estrogen, progesterone, and they come in menopause. Right. So this is natural phenomena. Every lady has to face that, and there is always this type of discomforts what comes with that. So, Is that also related to a dosha? मतलब अगर एक दोषा के हैं उसी को होगा ऐसा है? See, not everybody faces the same type of problem. So Pitta person, Pitta individual, they will be having much more problems compared to Vata and Kapha. Okay. You see, what you have, you will miss that. Right. What you never have had, you will never miss that. Okay, So simple. sorry doctor, I have to stop you again for a minute. We have another caller online. Yes. Mohammed, welcome to Zee Companion. हाँ सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे को पाँव में जो तकलीफ है मेरा लेफ्ट साइड के पाँव. हेलो श्रेया, हेलो. हाँ मोहम्मद बोलिए, हमें सुनाई दे रहा है, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपकी बातें, बोलिए. अच्छा जी, ये मेरे लेफ्ट साइड के पाँव के अंदर थोड़ा पाँव वलता नहीं है. वो जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है तो हमको कुर्सी पे चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ना पड़ता है. तो ये करीबन यहाँ आने से इंग्लैंड है 8 साल से, जब से मुझे पाँव में तकलीफ है. और पाँव के अंदर कभी कभी मसल्स रात को ऊपर चढ़ जाता है, एकदम नस पे नस जैसे चढ़ जाती है, एकदम मसल पिन होती है. देखिए, वैसे तो आपको जीपी के पास जाके चेक कराना चाहिए, पर जो मैं आपसे समझ रहा हूँ, इट लुक्स लाइक दैट योर यूरिक एसिड इज इंक्रीज्ड. और यूरिक एसिड इफ इज इंक्रीज, यू हैव टू हैव अ डाइट जो यूरिक एसिड को कम करता है. सो काली दाल, जो माँ की दाल होती है, यू शुड अवॉइड टेकिंग ब्लैक दाल. यू शुड अवॉइड टेकिंग ऑर्गन मीट like liver, kidney, gurde, kapure. This you should not be using. So very low or very poor calorie diet you should be following. So poor calorie diet means you should not be having much more meat, and black dal is very rich in proteins. So Perfect. you should avoid that, and that way it will be lower. In control. So doctor, before we continue, we have to head into a short break. पर मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है. गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जी कंपेनियन. अगर आपने अभी अभी टेलीविजन सेट्स ऑन किए हैं तो मैं आपको बता दूं, आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदा के बारे में और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनिल मेहता. तो लेट्स गो एंड टॉक टू हिम फर्स्ट. डॉक्टर मेहता, वेलकम बैक ऑन द शो. लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे और बातें करूं अबाउट आयुर्वेदा, हमारे पास एक कॉलर है. हेलो उर्मिला. हेलो जी, नमस्कार. वेलकम टू दी कंपेनियन. हाँ जी, बोलिए. मैं ना बुलबहमटन से बोल रही हूँ ना. तो मेरी उम्र ना 67 है. तो मैं ना, मेरे जोड़ हैं वो बहुत ज्यादा दर्द करते हैं. उसमें ना सूजन आई हुई है नीज में और घुटनों में, है ना. जी जी जी. तो मैं वैसे तो डॉक्टर की दवाई खा रही हूँ, मीथ्रोक्सीडेट टैबलेट्स ले रही हूँ. तो
फिर मैं उसके साथ ग्लूकोसमाइन सल्फेट भी लेती हूँ, पर स्टिल आई हैव अ लॉट ऑफ पेन। आपका वजन कितना है? एक बार और मैं ये बताती हूँ कि अगर आप कहते हैं ना कि गर्म चीजें जैसे अदरक ज्यादा खाओ और खाओ, ऐसा करने से मेरे को यूरिन प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए और क्या खाना? आपका वजन कितना है पहले ये बताइए आप। हाँ जी, वजन कितना है आपका? मेरा वजन है 62 किलो। अच्छा। और मेरी हाइट है 4 फुट 10। 4 to 10, so it's bit more. You must reduce a little bit. पर जितनी भी जोड़ों की दर्दें होती हैं, इसमें सबसे बड़ा कारण यही है जो मैंने पहले कॉलर को भी बताया है कि आपका प्रोटीन इनटेक ज्यादा है। तो आपको प्रोटीन कौन सी चीज में? प्रोटीन मीट मछली में होता है, दूध पनीर में होता है और दालों में होता है। सारी दालें नहीं, जो ये छिलके वाली दालें, काली दाल छिलके वाली जो है, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो हम लोग आजकल ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं तो उतना पाचन हो नहीं पाता। तो प्रोटीन ज्यादा जब लेते हैं, पाचन हो नहीं पाता, तो अपना बॉडी के अंदर वो सड़ता है जाके, वो जाके फिर अपने घुटनों में या जॉइंट्स में आके जमा हो जाता है। तो यू मस्ट अवॉइड टेकिंग प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन्स लेने भी है तो कम से कम वो जो दाल है छिलका उतार के मूंग की या मसूर की, वो खाओ आप। अच्छा, प्रोटीन को कम करो। और वो ऐसे भी कहते हैं कि जो छिलके वाली दालें होती हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं। वो अच्छी तो होती है, पर मैं वही बता रहा हूँ कि आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हो, वो बॉडी पचा नहीं पाती, तो यू मस्ट अवॉइड दैट। तो अदरवाइज गो टू योर जीपी, ही विल गाइड यू आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। पर ये जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोटीन ज्यादा ले रहे हो आप, आपकी डाइट में वो कम होना चाहिए। परफेक्ट उर्मिला, आई होप। वजन कितना होना चाहिए फिर मेरे? तो अगर 4-10 से आप, तो आपका वजन होना चाहिए 50 to 54 के बीच में। ओके, ऑलराइट उर्मिला, आपके घुटनों में पड़ रहा है। I wish you all the best and I hope आपकी तकलीफ बहुत जल्द कम हो जाएगी। So doctor, before I want to talk to you about a lot of things, पर बहुत सारे लोग हैं जो कॉल कर रहे हैं, so I think पहले उनसे बात कर लेते हैं। Hello, welcome to Zee Companion, Mr. Mika। हाँ जी सर। हाँ जी, Zee Companion में आपका स्वागत है जी। मैं कहा जी सत श्री अकाल, पहले तो बोल रहा हूँ सत श्री अकाल मिका सिंह जी। हाँ जी, मैं देखो सिंह बोल रहा हूँ। मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, पंजाबी में कर सकता हूँ? मैंने भी हिंदी आती है जनाब, कोई गल नहीं। पंजाबी बोल रहे डॉक्टर? हाँ जी, खुशी होगी, ठीक है जी। हेलो, बोलो। हाँ बोलिए मीका जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी प्रॉब्लम है भी मैनू नीली भी 10 साल हो गया भी मैनू आज स्किन की प्रॉब्लम हैगी आ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सोरियासिस ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, सोरियासिस ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਨਾ ਪੀਓ, ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। मैं दसना ਤੁਹਾਨੂੰ सोरियासिस ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ सोरियासिस ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। दारू ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਨੀਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰੂਫਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਸਿਸ ਅਲਕਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਮਕ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, दारू नहीं पीना और नमक घट करना है हर हालत ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਖੀਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਕੁਕੰਬਰ ਇੰਨਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਲਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਬ੍ਰੈਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। पेट साफ रखो, दूध लो, खीरा खाओ हर रोज और तली हुई चीज़ां नहीं खानियां, नमक नहीं खानियां, दारू नहीं पीना ना छुट्टी। तो यह हौली हौली ਇਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਇਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ सोरियासिस ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मीका जी, क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है? Are you getting? जी, मैं तो डॉक्टर साहब से यही पूछ रहा हूँ भाई, जो भी कुछ है मुझे तो जो भी कुछ
बताएंगे, मैं उनके साथ चलूंगा डॉक्टर साहब, ठीक है जी। तो बाकी ये आप करिए, तो फिर आपको कोई दवाई देंगे आप जब भी मिलोगे, पहले ये आप करके देखिए। All right, Mika ji, thank you so much for your call. लेकिन तो we'll move to the next caller. Hello, Mohammed. Welcome to Zee Companion. Hello, hi there. Hi. Yeah, my question is, I'm suffering from hay fever and runny nose. You know, I want to ask the doctor because, you know, when I sneeze, it doesn't stop continuously. It's just sneezing all the time. Yeah. So it's allergy. As you said yourself, this is allergy. Allergy can be due to plants or trees in your neighborhood or carpet in your house, dog, cat, any pet you are having in the family. You must avoid this type of things. And secondly, very simple tip I can give you, just take a little bit oil and with your little finger just bring in your nose. You see, we have got hair in our nose. That hair works as a safe that obstruct all the tiny particles going into our body. So if you put oil in your nose, then that tiny particles won't enter your lungs or and you won't sneeze that way. So that's one of the way to protect. Otherwise, we have to increase the immunity. Which oil do you want me to get? You're getting me? So we have to increase the immunity. Avoid that things. Clean your house. Dust-free. No pets. Right? I think it has given you answer of your question. All right. Thank you so much, Mohammed. Thank you so much for your call. We have another caller online. Miss Kaur. Hello. Welcome to Zee Companion, Miss Kaur. Hi, Sujata. Hi. I just want to talk to Doctor. जी. Doctor, मैंने ना blood sugar है तो मेरे पैर बड़े ठंडे होते हैं। अच्छा। मैं थोड़ी चिंता करनी है कि क्यों ठंडे होते हैं ऐसा। नहीं ये तो ब्लड शुगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ PNP ਪੋਲੀਨਿਊਰੋਪੈਥੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਔਰ ਨਮਨੈਸ ਆਣੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣੇ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪੈਰ ਗਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵਧਾ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਗੋਲ ਮਿਰਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 8 ਤੋਂ 10 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲੋ ਕਰ ਜਾਓ ਵਿਦ ਵਾਟਰ and take for a short period 7-8 ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 7-8 ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਟ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਯੂਰ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ। डॉक्टर मेरा हाई ब्लड प्रेशर भी होगा तो हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं होगा? नहीं काली मिर्च ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਚਾਏਗੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 37 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। All right, Miss Kaur. Thank you so much for your call. Thank you. So now, Doctor, we have Kranti on the line waiting to talk to you. Hello, Kranti. Hello. Kanti. Hi, Kanti. So sorry. Kanti, welcome to Zee Companion. Hello. Hi. Hi. जी हाँ कांति, हमको सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। मेरे को रूमेटिज्म है और मेरा जो फिंगर स्लोलन हो जाती है ऐसा है। वो लोग कभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको ब्लड चेक करेंगे एवरी 2 वीक्स एंड मेरे को टेबलेट दिया हुआ है। Yeah, that must be मेटाट्रेक्साट देने से ब्लड को चेक करना पड़ता है 2-3-4 हफ्ते के बाद। So that is a very, very strong medicine. It's going to give you a bit support in that, but it's not the real cure of that. You must continue with that. But I can advise you something on your food stuff. देखो आपके खाने में you must avoid rice. राइस अवॉइड करना। हाँ, राइस अगर खाते भी हो तो वो उबाल के उसका पानी यू मस्ट थ्रो इट अवे, वो जो बोलते हैं मांड निकाल के खाना राइस को। चावल, भिंडी, अरबी, उड़द की दाल, कोल्ड स्टफ, एप्पल, ये चीजें कम खाना। योगर्ट आल्सो इज टू बी अवॉइडेड। बनाना यू मस्ट नॉट टेक दैट। बनाना खाना कि नहीं खाना, ये नहीं खाना। हाँ, एक बनाना इज इक्वल टू 8 ब्रेड पीसेस। तो इतना उसको पचाने के लिए आग चाहिए।
So that way you don't have sufficient agni to digest all that food stuff. So भारी फूड जो है उसको हमें अवॉइड करना है, ठंडे फूड को अवॉइड करना है. जैसे चावल मैंने बताया, चावल इज कोल्ड इन नेचर, यू मस्ट अवॉइड दैट. तो खाने में जैसे फिर अजवाइन और काली मिर्च, 1 मिनट में लिख लेता हूँ, सॉरी जी. अजवाइन और काली मिर्च इसका ज्यादा प्रयोग करिए अपने खाने में. अजवाइन, काली क्या? ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर. और ब्लैक पेपर, अजवाइन और हाँ, ये आप खाने में ज्यादा इस्तेमाल करें. अच्छा, जास्ती खाने में डालने का. जी 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 जी. All right, Kanti, I hope that answers your question. Thank you so much for your call. तो डॉक्टर साहब, हर एक प्रॉब्लम के लिए ऑब्वियसली जीपी से तो हम दवाइयाँ लेते ही हैं और वो तो हमेशा ही लेनी चाहिए. आई वुड अगेन से कि जीपी से हमेशा दवाइयाँ जो अपने जीपी ने दी हुई है वो हमेशा लेते रहें, उसे रोके बिल्कुल नहीं. और ऑब्वियसली डाइटरी चेंजेस आप जो प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज दैट योर डॉक्टर, योर जीपी कैन गिव यू वंडरफुल मेडिसिन, but if you are doing wrong things at home, if you are taking bad combinations, wrong combination of your food, medicine is not going to help you. Right, so eating the right food is very as important as medicines. Perfect. So we have one more caller on the line to talk to you. Hello, Geeta. Hello, Geeta. Hello there. How are you? Hi, I'm good. How are you? Welcome to Zee Companion. थैंक यू सो मच. मैंने डॉक्टर को पूछना है, वो जो मेरा बेटा है उसको ADHD डिसऑर्डर है और उसके साथ में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी है, तो उसके लिए अगर कोई आयुर्वेदिक दवा सजेस्ट कर सकते हैं? क्या उम्र है बच्चे की? 17 साल की. 17 साल का. ओके. यू सी, दिस इज ऑल न्यू एज प्रॉब्लम्स. दिस आर ऑल न्यू एज प्रॉब्लम्स. और ये बच्चे का जन्म टाइम पे हुआ था, ही वाज अर्ली बॉर्न? नहीं, वो उसको when he was 14 it was all diagnosed. नहीं, वो 9 महीने के बाद पैदा हुआ था या थोड़ा सा जल्दी पैदा हो गया था? नहीं, टाइम पे हुआ था. टाइम पे हुआ. अच्छा. एंड ही वाज नॉर्मल वेट व्हेन ही वाज बॉर्न? नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल था. नॉर्मल वेट. अच्छा, ठीक. So otherwise these are new age problems. Only this type of problems we are facing only nowadays. Earlier it was not that. It's because of the food, essential fatty acids, not enough essential fatty acids. These can be the reasons. So आपका food जो है वो complete होना चाहिए. So there are medicines, of course, there are medicines, natural medicines. Brahmi, स्वर्ण ब्राह्मी आप इंडिया से मंगवाइए अच्छे स्टोर से. स्वर्ण मीन्स गोल्ड. गोल्ड ब्राह्मी मिलती है इसके नाम से, वो दीजिए हर रोज उसको. और खाने में आप देसी घी, मेड ऑफ बटर, काउस बटर, नॉट दैट ऑफ वेजिटेबल ऑयल मेड घी. नो, it should be desi ghee. Every day 5 to 10 grams putting into warm soup. These are fatty, essential fatty acids. This is food for our brain. That way brain works good. It can focus. So that is the focus problem he is facing. All right, Nadia. I hope that answers your call. Thank you so much for calling us. Sorry, we have Nadia on the line. I messed up. Sorry. जी. हमारे साथ नादिया बात. हाँ, नादिया, बोलिए. Welcome to Zee Companion. Thank you very much. Assalamu alaikum, Mr. Muhammad. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. बोलिए. Okay, right. I want to ask Mr. Muhammad that I lose a lot of hair. You lose a lot of hair. Nadia, it's actually Dr. Mehta who is talking to you. Yeah. Yes, Dr. Mehta. It's Mehta, not Mohammed. But I guess, I'm sorry. I just beg your pardon. Yeah, it's all right. I apologize. Yeah. I saw Muhammad when I dialed the number. Okay. Okay, namaste, Mr. Mehta. Ji, namaste. So here losing. At what is your age, if I may ask that? I'm in my 50s. You are 50s. So again, it's a hormonal problems. So you must take, generally GP will give you anti-conception pill, conception pill, that tablet. He hasn't given me anything. No, he is not giving you anything, then you take extra soya. Specialist haven't given me anything. Okay, then you can buy soya, you can use more soya product in your food. Soya products, soya beans, soya milk, tofu, tempeh. This fermented soya will work better.
for this. All right, Nadia. I hope that answers your question. Yeah. Thank you so much for your call. Doctor, we have another caller online. Hello. Welcome to Zee Companion. Vimay? Vimay, can you hear us? Doctor, we have another caller online. Hello, Vimay? Hello, good evening. Good evening. Welcome to Zee Companion. Hello. हाँ जी बोलिए. हाँ जी, सुजाता, मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ? हाँ जी, वो सुन रहे हैं, आप उनसे पूछ सकती हैं. हाँ जी, डॉक्टर साहब, मेरे हील्स में बहुत जलन होती है. पेट में? हील्स में, आई थिंक. अच्छा, हील्स में, पैरों के. अच्छा, ठीक है. हाँ, तो ये ब्लड प्रेशर ठीक है आपका? नहीं, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई है. हाँ, तो इट्स बिकॉज ऑफ द ब्लड प्रेशर and you must take medicines for your blood pressure. It will go automatically. तो थोड़ा सा प्रवाल पिष्टी इसमें काम करती है, मुक्ता पिष्टी काम करती है. You can buy that. हाँ, और हर रोज 1/3 of the cucumber with your food वो खाइए, और रात को सोते समय दूध जरूर पीजिए. Both are alkalizers. खीरा और दूध दोनों अल्कलाइजर्स है. अगर खाओगे तो आपका जो ब्लड एसिडिक है वो न्यूट्रल हो जाएगा एंड यू वोंट फील हीट इन योर फूड सोर्स. All right, Vima. I think that answers your question. Thank you so much for calling us. We have Kawaljit on the line. Hello, Kawaljit. हाँ जी, हेलो जी. हाँ जी, वेलकम टू ज़ी कंपेनियन. नमस्कार जनाब. ये मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था. ही इज अबाउट 28 years of old एज, और उसको क्या होता है डॉक्टर साहब, ही इज थैलेसीमिया माइनर, और उसको बार बार खांसी जुकाम बहुत ज्यादा हो जाता है, फीवर भी हो जाता है एवरी नाउ एंड देन सिंस लास्ट 1 year और मोर. तो उसका कोई देसी इलाज है जो he has taken antibiotics also few times? Yeah, this is clear case of allergy actually. हमें मालूम नहीं पड़ता. You come in contact with 1001 things every day. In our house there are a lot of stuff, carpets, wearing clothes of that type, or pet, or trees in your neighborhood, plants keeping in your house. This can be the reasons behind. So just bring change in that. And like earlier caller, I suggested them to put bit oil in the nostrils while having bath. So you can train her putting oil in your nose. So this will obstruct all that particles going into your body. So body won't react. So if it's this type of symptoms are that body is reacting to some stuff. So we should identify that stuff. Getting fever, no mild fever. हाँ, तो that can be. तो इसका जो घरेलू इलाज है बड़ा सिंपल है, वो है तुलसी बेसिलिकम वी कॉल बेसिल, होली बेसिल. तो उसकी चाय बना के पीजिए. आपने जब भी वो कुछ लिक्विड लेते हैं तो चाय में थोड़ा सा तुलसी के पत्ते डाल दो, या तुलसी की चाय मिलती है बड़ी बनाई. तुलसी इज वेरी गुड. एंड हाउ ओल्ड इज शी? 28 years. 28. Then you can give her black pepper also. Or raw black pepper. Black pepper. Just let it swallow, or let her swallow that. 7 to 8. How much? 7 to 8 balls. Or dahi. Avoid dahi. Yogurt. Yogurt you should avoid. Okay. And I think this will help her. And if you want to give some medicines, then is Giloy and Sirish. These two medicines you can buy from general store, from where they sell Ayurvedic medicines. Giloy and Sirish. These two combinations will boost her immune system. If immune system is better, then she can cope with that allergens what she is coming in contact with. All right, Kawaljit. Thank you so much for your call. So, Dr. Mehta, we were talking about the 3 doshas that you said. Right. And आपने कहा था कि हर दोषा का एक अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक है. जी. तो आप थोड़ा elaborate कर सकते हैं उस पे? As I said that Vata is made of air element. So you see in general air's qualities are, air is cold in nature, air is dry in nature. Air is moving all the time. You just can't hold somewhere. it. Yeah. So it's moving, it's cold, it's dry, it's light in weight. So people having Vata dosha in prominence, they must be light in weight. Okay. They must be having low body temperature.
so they will be skinny, they won't be overweight. So as Vata, as air is moving, so Vata people will also be of nature, talking with their hands first, moving here and there. Okay. So all the elements, they will show its own qualities. Right. Doctor, I'm going to have to pause you for a second again because we have another caller on the line. Mrs. Singh, welcome to Zee Companion. मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा ग्रैंडसन है, वो 8 साल का है, तो वो जब पैदा हुआ तो उसको रिफ्लक्स था, तो 3 साल इन आउट हॉस्पिटल रहता रहा, तो वो क्या है, वो बहुत ही स्किनी है और वेट नहीं पुट ऑन करता, खाता तो ठीक है अभी, तो वेट नहीं पुट ऑन कर रहा। दूसरा वो अभी 8 साल का, उसका जैसे पढ़ने पर बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो जब भी उसको पढ़ाई के लिए बिठाते हैं तो वो बोलता कि मेरे को हेडेक है और वो मारना शुरू कर देता है और बाइट करना शुरू कर देता है, तो उसके पता नहीं दिमाग स्टडी नहीं है। जी, because you said he is skinny, that is the reason behind. Skinny means that हमारी बॉडी के 7 tissues होते हैं. 7 type of tissues we are having. We are having plasma, blood, muscles, fat, bones, bone marrow, and seeds. So if he is skinny, then all the 7 body essential tissues are less than it's required. So if it's less than it's required, how it can function optimal? So quantity is needed to work quality wise. So first we have to increase the quantity. Quantitative. Right. So we have to increase his weight. We should give that type of food stuff that's going to fulfill more plasma, more blood, more muscles, more fat, more bones. So you must consult a good Ayurvedic doctor in your neighborhood, and he is going to take care of that. So obviously, if there is less material stuff, then there is much more air. Right? If there is much more air, then air is of the movement character, there will be much more movement in his head. So he won't be able to focus. To make him focus, we have to put his weight. Only that is the way to decrease air. Right? So what you can do at home, that give him daily oil massage. You just buy sesame oil from your neighborhood. Then every day, sort of playing, you give him massage with that mustard oil before shower, before having bath. So because air is dry in nature, so oiling body will decrease that. With massage, you will increase his body temperature, because Vata is cold in nature. Increasing temperature, that will subside Vata, that will subside air. Perfect. So these 2 things you can do at home. Great, Mrs. Singh. Thank you so much for your call. We have Simran on the line. Ji, Simran ji. Hello, Simran. Welcome to Zee Companion. Hi, thank you very much. I have a question. My daughter, she's about 24. She started having this itchiness on her body. She's tried many medications, but nothing is affecting her so far. And I just need to know if there's any desi dawai from Mr. Mehta, if there's one. You said itching on her body, right? Yes, she has. Yeah. You see, itching is very first symptom of root cause, that her blood is more acidic. So we have to neutralize her blood's pH value. We have to neutralize. It means that it should be alkaline. So alkaline food should be given. No salt, rather salt should be lowered in its dose, and no fried food, no grapefruit, no citrus, no vinegar, no alcohol, and not salt. This you should avoid, and taking every day with the meal 1/3 of the cucumber, kheera, 1/3. Sure, you must give her. And before going to bed, she must take a glass of milk, because this both kheera and milk are alkalizer in the nature. They will neutralize all that blood's heat, and she will be okay. All right, Simran, thank you so much for your call. Yeah. She gets pimples, they are dry. And then they're dry, it seems like skin is burning. That's how it is, that itchiness. So that's we have to see personally. All right. I can advise. Simran, I hope Dr. Saab ne jo advice di hai wo aapko useful lage. Thank you so much for calling us. And we have another caller online. Hello, welcome to Zee Companion. Hello. Hi.
हेलो हेलो Hello. हाय, वेलकम टू जी कंपेनियन। हमारे पास ना बहुत कम टाइम है, तो आप जल्दी से अपना सवाल पूछ लेंगी। हाँ जी, मैं पूछ लेंगी। मैंने लूपस हो गई 22 years and I've got lung disease as well. Lung disease, okay. What type of lung disease? Swollen, I've got lung disease because I've got lupus for 22 years. Okay. And with that, I've got lung disease. Yeah, lupus you said, right? Yes. Yeah, you see, this is immunological problem. So we have to see you personally to guide this type of patients. But in general, what you can do at home, avoid taking yogurt, banana. Banana you should not take. You should not take yogurt. And extra, what you can do is pipli. Pipli is long pepper. Pepper longum, they call it. From any general store here in UK, you can buy long pepper. It's so long and it's very black. Just fry it in your desi ghee and crush it, make it powder. And every day, 3 grams with milk, 2 to 3 grams. You start with 2 grams and increase it to 3 grams of. This is the only drug for the lupus and your lung disease. All right, Cam. You can buy it everywhere. All right, thank you so much for your call. And Dr. Saab, thank you so much for being with us today. We are out of time, so हम और बात नहीं कर सकते इस पे. But thank you very much for coming on Zee Companion and answering so many questions. It's all my pleasure. Thank you very much.